I have this idea of not being a man who lives a very varied life, and the simple reason behind that is that when you try to live a very varied life, you inevitably end up living a very shallow life. So what you, I and everybody else should be striving for, by the way, ये मेरी स्किन इस वजह से ग्लो कर रही है क्योंकि मेरी खिड़की का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है. So what you and I should be striving for is to live a very attentive life, क्योंकि उसके बाद the flavors of life that you and I will have will always be very rich. आप बहुत डीपली जिएंगे एक एक मोमेंट को. दैट हैज़ इट्स प्रोज, दैट हैज़ इट्स कॉन्स, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल बी ऑन योर डेथ बेड, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं था तो बहुत जगह लेकिन मैंने जिया बिल्कुल नहीं. यू वुड से कि मैं था बहुत कम जगह लेकिन मैंने जिया पूरा. एंड आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, कंसिडरिंग के ऑफन जैसे जंक वॉल्यूम होती है जिम के अंदर, वैसे ही जंक वर्क होता है आपकी वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर, एंड वैसे ही जंक एक्टिविटीज़ होती हैं. They do not necessarily contribute to you going there, reaching where you want to reach, and you cannot put the horse in front, the cart in front of the horse. Let's just put it like that. You cannot call the future into the present by working harder. Sometimes what you want is simply a function of time and patience. The hardest workers in the world cannot pull the future ahead. They can only perform at their best, and then let time do its bidding. This is one of the reasons why I'll always believe that Michael Jordan is a better player than Kobe Bryant, because Kobe Bryant used to believe in the idea of work more harder and harder and harder, but I think that has a cap. And Michael Jordan के बारे में बात famous है कि he used to be like a fun guy and everything. I think personally Michael Jordan has to me he's a more successful person overall, and that's because of my ethics of what success means, which is why I will always say that I would rather be Luke Belmar instead of Andrew Tate. And for those of you who know, I do not necessarily prescribe to the idea of working endlessly, अपनी पूरी फैमिली को sacrifice करके, हेल्थ को sacrifice करके. I don't think that as a Muslim this can even be possible, given कि आपके ऊपर कितनी ड्यूटीज़ होती हैं. If you want to live as a Muslim, तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ड्यूटीज़ आ जाती हैं. You cannot just forsake your entire family and go and work 24/7. बहुत सारे हुकूक आ जाते हैं. And इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखते हुए, then maybe you will work when you have to work and you will entertain yourself when you will have to entertain, but you will live there. मुझे लगता है बहुत सारी सोशल एंग्जाइटी का जो कॉज है वो ये है कि पीपल डू नॉट नो व्हाट टू से टू अदर पीपल या हाउ टू अप्रोच अदर पीपल, एंड दैट इज़ बिकॉज दे डोंट सी एनीथिंग इंटरेस्टिंग इनफ इन देम. दे जस्ट सी देम एज डमीज ऑन द इंटरनेट. तो जैसे आप स्क्रीन पर लोगों को देखते हैं वैसे ही आपको लगने लग गया कि ओरिजिनली में लोग आपके आसपास जो चलते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं. एंड बिकॉज द पीपल यू सी ऑन द स्क्रीन, you perceive them in a very shallow nature, not because they are shallow, but because the medium you're observing them through, which is your phone का screen, has limitations. आपको ऑलमोस्ट ये लगने लग जाता है कि जैसे लोग मेरे सामने चल रहे हैं, ये भी आप उतने ही परसेप्शन पे लेने लग जाते हैं. Like you don't necessarily drill deep into them from perspective level. You don't try to understand them बहुत अच्छे से. You just try to analyze them, right? And there's a difference between analysis and understanding. अगर आप अपना फ़ोन छोड़ के जाएंगे एंड यू विल एक्चुअली गो टू एनी प्लेस एंड यू विल गेट यूज टू, देन यू विल फाइंड कि आप जिस इंसान को भी देखेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन देम इनफ कि आप उससे जाके कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लें, एंड विल नॉट फील वियर्ड और ऑकवर्ड, बिकॉज वो कन्वर्सेशन फोर्स नहीं होगी. वो जेन्युइनली आपने उसको देख के आपके दिमाग में ख्याल आया होगा. मे बी कोई इस तरीके के शॉर्ट्स पहना हुआ हो जो उसका टेक्सचर थोड़ा जीन्स की तरह का हो, तो यू मे बी थिंकिंग कि हे यार क्या तुम ये पहन के सो सकते हो. मे बी देयर इज अ गर्ल हु हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टैटू ऑन हर रिस्ट एंड यू आर लाइक दैट्स अ वेरी नाइस टैटू, वेयर डिड यू गेट दैट मेड. नाउ यूजुअली ये जब आप अपने दिमाग में लॉजिकली सोच के जाते हैं कि मैं इस लाइन के साथ ओपन करूँगा और फिर जाके मुझे ये रिस्पॉन्स आएगा तो मैं ये बोलूँगा, इट डजंट रियली वर्क दैट वे. लेकिन जब आपका पूरा फुल फोकस अटेंशन वहाँ पे होता है, देन पीपल कैन फील इट इन योर वॉइस, राइट? व्हेन यू आर नॉट फबिंग अराउंड ऑन योर फोन, पीपल कैन रियली फील इट. एंड आई से दिस एज अ पर्सन जो कि पहले बहुत ही बड़ा बिलीवर था मल्टीटास्किंग के अंदर. नाउ आई एम नॉट. आई स्टिल हैव परहैप्स द फास्टेस्ट फिंगर्स ऑन अ कीबोर्ड अमंग्स्ट माई पर्सनल सर्कल एट द मोमेंट. And I sometimes regret that because I would be working on a project and out of sheer habit I'll just hit command tab, which will take me to another window जिसपे कुछ और खुला होगा. And this is despite me trying to introduce many measures to stop myself from zipping across screens. तो मैं खुद इसके साथ बहुत ज़्यादा struggle करता हूँ. It got me in the beginning to a decent healthy place, but I think कि ये कितनी weird बात है. I'm trying to be as nuanced as possible because I don't want to give you the wrong advice based on the basis of where you are. शुरुआत में when you are
जस्ट स्टार्टिंग आउट आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता है ना, तो वहाँ पे आई थिंक इट्स बेस्ट कि यू ट्राई प्रैक्टिकली एवरीथिंग, एंड व्हेन यू ट्राइंग लाइक एवरीथिंग तो स्पीड इज़ योर फ्रेंड, यू लाइक सब चीज़ें ट्राई कर लो, पता नहीं कौन सी वाली विल स्टिक, यू आर ट्राइंग सो मच, बट देन वंस यू फाइंड समथिंग जहाँ पे आपको लगता है कि ओके देर माइट बी समथिंग इन दिस, देन दैट्स वेयर यू स्टार्ट लाइक स्केल बैक, एंड यू एक्चुअली हैव टू थिंक थ्रू थिंग्स बिफोर हैंड, थोड़ा सा बिफोर एक्चुअली डूइंग देम, क्योंकि अदरवाइज यू विल जस्ट एंड अप overworking yourself, you'll end up exhausting yourself, you will chase projects जिनका कोई मीनिंग नहीं है, that do not yield a lot of benefit to you, and आप बस ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग जाएंगे जो कि वैनिटी मेट्रिक्स आपके बूस्ट करेंगे, इट विल नॉट नेसेसरली कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू हैव, and at the end of the day, on your deathbed, the only thing that will actually matter is the quality of life, which is directly proportional to how proud you felt when you lived your life, which is again directly proportional to how much in tune you lived your life with your values. Now, whatever your values are, think about how in tune do you live with it. One of my values is to be present for the people that I love, and I have felt that work has always taken away from that whenever I have worked outside of work environment. That means जब मैं रेस्टोरेंट में बैठ के किसी के मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, that is always taken away from the spark of the conversation, and that is what I think going forward, at least मेरे जब तक आई कैन लाइक कंट्रोल दिस एस्पेक्ट ऑफ माई सेल्फ, मैं इस पर काम करने की कोशिश करूँगा कि यार ट्राई कि यार मैं जब मैं किसी के साथ हूँ, दैट पर्सन शुड नेवर फील कि अब्दुल्ला किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ एंड इफ इट इज़ रियली दैट इंपॉर्टेंट दैट आई शुड नॉट बी विद दिस पर्सन और एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, फिर मुझे वो जेन्युइनली वो काम के बारे में देखना चाहिए. ये मिसप्लेस प्रायोरिटीज़, ये मल्टीटास्किंग विल ओनली गेट यू सो फार इन लाइफ. यू विल सिंपली एंड अप लिविंग अ वेरी शैलो, बहुत ही शैलो और बहुत ही पता नहीं यार, मतलब अजीब यार, बहुत ही चीकट जिंदगी. डज दैट मेक सेंस? यू विल नेवर बी रिस्पेक्टेड इन वेल्दी सर्कल. यू विल बी रिच बट यू विल नेवर बी वेल्दी. तुम्हें वेल्थ छू के भी नहीं जाएगी, तुमसे भागेगी दूर वेल्थ, क्योंकि there is no sense of relaxation in it, there is no sense of control in it, there is no sense of responsibility, authority, there is no sense of तवक्कुल in it actually. क्योंकि तुम हर चीज़ इतनी ज़्यादा कंट्रोल करने की उसमें हो कि तुम्हें लगेगा कि यार मुझे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब एक साथ कर लूँ, तो तुम कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ बनने की कोशिश करते हो, नौजुबिल्ला. एंड आई थिंक दैट इज़ वट वी नीड टू स्टॉप एज पीपल हु वांट टू अचीव न्यू थिंग्स. The grace of letting it go, the grace of letting it go temporarily, only to come back at it harder and stronger when we actually get to work. That is what I'm trying to do.